विश्वामित्री नदी में जलस्तर बढ़ने से वडोदरा चारों तरफ से पानी में डूब रहा है। बहुत से लोग जो बाहर गए थे वे भी वडोदरा में फंसे हुए। ऐसे में लोगों के बचाव के लिए सूरत नगर निगम की अग्निशमन विभाग की टीम तैयार होकर वडोदरा के लिए रवाना हो गई। जब भी गुजरात में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा आती है तो सूरत नगर निगम विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन करता है। सूरत सिटी टीम को बाढ़ के दौरान बचाव कार्य और बचाव बाद सफाई कार्यों में व्यापक अनुभव है। फिलहाल वडोदरा में विश्वामित्री नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे कई इलाके पानी में डूब गए हैं। बाढ़ के कारण अब प्रभावित इलाके से लोगों को निकालने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सूरत अग्निशमन विभाग द्वारा 4 अग्निशमन अधिकारियों के साथ 20 अग्निशमन कर्मियों की एक टीम भेजी गई है, जिसे अलग अलग टूल्स के साथ भेजा गया है। संवाददाता सुनील पटेल, BHP न्यूज, सूरत। हाँ, ईश्वर इंचार्ज डेप्यूटी चीफ फायर ऑफिसर सूरत महानगरपालिका। हाल में मेहरबान कमिश्नर साहेबना અને ચીફ ફાયર ઓફિસર સાહેબના આદેશ મુજબ જે બરોડામાં જે પાણીની ઘટના અને પૂરની ઘટનાઓ છે એની બચાવ અને રાહતની કામગીરી માટે સુરત ફાયર બ્રિગેડના 22 તરવૈયાઓ અને 4 અધિકારીઓ, 4 રેસ્ક્યુ બોટો અને 4 વ્હીકલો સાથે સુરતથી હમણાં બરોડા જવા માટે રવાના થઈ રહેલ છે। હાલમાં છે વિશ્વામિત્રી નદી જે સુરત બરોડાની અંદર જે પસાર થાય છે તેની અંદર ક્રિટિકલ પરિસ્થિતિ છે, પાણીનો વેર વધારે છે અને ઘણા બધા ઇલાકાઓમાં જે પાણી ભરાઈ ગયા છે ત્યાંથી ઘણા બધા માણસો શિફ્ટિંગ કરી અને બચાવવાની કામગીરી કરવાની છે। એની સાથે સાથે ઘણા બધા સરકારી અધિકારીઓના પર મેસેજ છે એટલે એ લોકોની પણ બચાવ કામગીરી કરવાની છે। હાલમાં છે ને સુરતની 4 ટીમ ત્યાં જઈ રહી છે।